Okay, student, I discussed a special type of quadrilateral. In previous videos, we already discussed the properties of quadrilaterals. Kite is a special type of quadrilateral. ठीक है? A, B, C, D is a kite, and we discuss the different types of property of kite. In kite, the adjacent side are equal to each other. It means side AB equal to side AD. Similarly, side BC equal to side DC. This is called the adjacent side. AB equal to AD and BC equal to CD. AB AD के इक्वल होगा, BC CD के इक्वल होगा. इसे कहेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ काइट. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी है a line joining B to D and A to C. These are the diagonal of this kite. So both diagonal are intersecting at 90 degree. This is 90 degree and this is 90 degree. ठीक है. Both diagonal are intersecting at 90 degree. Intersecting at 90 degree. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी है, देखो उसमें क्लियरली लिखा है द डायगोनल AC इज लार्जर देन द डायगोनल BD. AC डायगोनल BD डायगोनल से क्या है, लार्जर है. तो डायगोनल AC बाइसेक्ट टू डायगोनल BD. सपोज दिस पॉइंट O, then diagonal AC bisect to diagonal BD. That means BO equal to OD. ठीक है. And fourth property is angle B equal to angle D. Angle B equal to angle D in case of kite. So these are the property of kite. Now it's proof how to angle B will be equal to how to angle D. Suppose this angle is 1, angle 2, angle 3 and angle 4. So in triangle ABD, in triangle ABD, angle opposite to equal sides are equal. That means angle 1 will be equal to angle 3. Angle opposite to equal side. ठीक है. Similarly, in triangle CBD, in triangle CBD, angle opposite to equal side are equal. We are already discussed to BC side CB side के equal है. It means angle 2 equal to angle 4. Angle opposite to equal side. ठीक है. Equation number 1 and equation number 2. Now adding equation number 1 and 2. Adding 1 and 2. Angle 1
plus angle 2 equal to angle 3 plus angle 4. ठीक है, now see this diagram, angle 1 plus angle 2 equal to whole angle B. एंगल 1 में एंगल 2 ऐड करेंगे तो एंगल B आएगा, एंगल B, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू होल एंगल D. ठीक है, 3 में 4 ऐड करेंगे तो एंगल B आएगा. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ हाउ टू एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल B. Now discuss some important theorem. Angle sum property of a quadrilateral. The interior, the sum of interior angles of a quadrilateral is 360. ठीक है, इस कर्व को बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. Let ABCD is a quadrilateral. Now join a line A to B. This is the diagonal of quadrilateral. ठीक है, A से B को join करा तो diagonal of quadrilateral का. Suppose this angle is 1, this angle is 2, this angle is 3, and this angle is 4. In triangle ACD, in triangle ACD, the sum of interior angle of triangle equal to 180 degree. Now angle 2 plus angle C plus angle 4 equal to 180 degree. Angle 3 plus angle C plus angle 4 equal to 180 degree. By angle sum property of triangle. Clear? Similarly, in triangle ABD, angle 1 plus angle B plus angle 3 equal to 180 degree. Angle 1 plus angle B plus angle 3 equal to 180 degree by angle sum property of triangle. This is question number 1 and 2. Now adding question 1 and 2. Adding equation 1 and 2. Angle 2 plus angle 1, angle 2 plus angle 1, angle 2 plus angle 1, angle 1 में angle 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, angle A. ठीक है, angle A plus angle C plus angle B, angle C plus angle B, and angle 4 plus angle 3. एंगल 4 में एंगल 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, होल एंगल D प्लस एंगल D इक्वल टू 180 प्लस 180 विल बी इक्वल टू 360. So this is the proof of this theorem. Sum of interior angle of triangle or quadrilateral is 360 degree.
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360. क्लियर? ओके, थैंक यू.